All right. The next topic is Model Prisons Act 2023. In India, the law prohibits under trials from casting their vote. In India, the law prohibits under trials from casting their vote. True or false? False, sir. Karishma, the thumbs up emoji is true and the face emoji is false. You must only give me the emojis. I will come to you and ask the explanation, then you tell me. Yes, so Okay. this will enable me to see what everybody is answering in one go. Okay. It is a true statement. The Prisons Act of 1894 is based on the recommendations of the Prison Discipline Committee of Lord Macaulay. True or false? The Prisons Act of 1894 is based on the Prison Discipline Committee of Lord Macaulay. Not this face emoji, Karishma. I think the default face emoji that you see is this one. You can see it on my screen. This is the default face emoji. I mean, you'll not have to toggle through the emojis. This is the direct one that you can get. So you just use it for no and thumbs up for yes. Lakshmi, you know the answer to this question? I didn't see your response. You don't know. Okay, Neel, just take a call. Okay, Karishma, this is a false statement. The Prison Act of 1894 is based on Discipline Committee, Prison Discipline Committee of Lord Macaulay is a false statement. Why do you feel it is false, Karishma? Sir, Lord Macaulay is not related. सर वो तो लॉ कमीशन के ऊपर बॉडी की साइड से. लॉ कमीशन के बॉडी की साइड से था. सर आपने मैकॉली के बारे में बोला ना. हाँ. तो सर आपने प्रिजन ट्रायल के बारे में बताया कि वो उससे रिलेटेड नहीं थे सर, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था. नहीं, तुमको क्या लॉर्ड मैकॉले ने क्या क्या किया था पूरा डिटेल मालूम है? नहीं सर, लेकिन फिर भी ये ऐसा लगा कि ये फॉल्स है. यही तो गड़बड़ होती है ना एग्जाम में कि हम पार्शियल. तुम्हारे पास ये क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना कि लॉर्ड मैकॉले ने नहीं किया है? नो सर, नो सर. है ना, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि मैकॉले ने क्या क्या किया, बस उस लिस्ट में ये प्रिजन्स का नाम नहीं था, इसलिए तुमको लग रहा है कि मैकॉले नहीं था, राइट? यस सर. Okay, Neil, why is it false? You also said it is false, or I think you said it. You don't know the answer, right? I don't know. Yes. You don't know the answer. तो guys देखो, ये एलिमिनेशन टेक्निक से इसको करने का एक तरीका है कि when we are faced with unknown facts, so if we don't have a reason, any valid reason to say that the fact is false, then by default the fact generally is true. तो ये जो है प्रेजेंट डिसिप्लिन कमेटी, बिकॉज दिस एन अनप्रिपेरेबल स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ लॉर्ड मैकोले, if I give any other name also, then also you will not know. If I said Gandhi, then it will become false because Gandhi is too famous and too important. अगर कुछ ऐसा गांधी से रिलेटेड होता तो हम पढ़ते, बुक्स में हो जाता, right? So Macaulay, and this is an administrative matter, administrative stuff. तो ये सब चीजें तो होती रहती थी. These were just regular things which these people used to do. तो मैकोले के बदले अगर कुछ और नाम भी होता किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कमिटी को लेके, किसी और टॉपिक को लेके, वो भी स्टेटमेंट करेक्ट होता, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. करिश्मा, इज इट मेकिंग एनी सेंस? ओके सर. ये टेक्निक हमने अभी तक सीखी नहीं है, लेकिन जब सीख जाओगी तो इट विल मेक मोर सेंस. Okay. Okay sir, thank you you. don't need to remember these kind of facts. The point is, इस टाइप के अननोन छोटे फैक्ट्स को याद करने में अपना मेंटल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है. इस टाइप के फैक्ट जनरली करेक्ट होते हैं, ठीक है? Okay. बाकी प्रैक्टिस से, PYQs की प्रैक्टिस से तुमको पता चल जाएगा कौन से फैक्ट्स नहीं करेक्ट होते हैं, and then you can be more accurate. But as of now, these kind of facts, just take them to be correct for now.
Okay, now the next statement is, tell me whether it is true or false. The 2023 Model Prisons Act is inspired from the Prisons Act of 1894 and is a modern replica of the same. The 2023 Model Prisons Act is inspired from the Prisons Act of 1894 and is a modern replica of the same. Let me know if you want me to repeat the question. Okay. So Karishma, why is it a true statement? Karishma, Yes, sir. why is it a true statement? Sir, you said that के जो prison वो 2023 का है, तो modern replica of the present. ऐसा था ना सर? हाँ हाँ. हाँ, तो सर ये true हो सकता है. Okay. Because सर जो भी हम मतलब जो स्कीम्स लेकर आते हैं और या वैसे भी कुछ लाते हैं सर, वो बेस्ड ऑन द एंसेंट, क्या हम बोलते हैं ना, अपने पास से कुछ सीखो. ठीक है, तो मतलब वो एक अपडेट है, वो पुराना लॉ था उसको एक अपडेट कर दिया, इसलिए एक मॉडर्न रेप्लिका है. ओके. हाँ सर. ओके मुकेश. अमेंडमेंट में हम कुछ चेंजेस करते हैं. ओके अग्रीड. मुकेश, तेरा भी सेम रीजन है? सर हाँ, 1894 के बाद यही आया है अभी. ठीक है. सुनील, व्हाई डिड यू से इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? Because the previous act had many issues and you said replica. So replica Yes. means just an Yes. exact copy. Yes. This is the reason why this is a false statement. I said the 2023 Act, Models Prisons Act, is inspired from the Prisons Act of 1894. यहीं पे ही इसका vibe जो है positive है. When you are inspired from someone, you want to emulate that person, right? You want to follow in their footsteps. Point number one. And then I extended this tone by saying it's a modern replica of the same. It is not a modern replica of the same. It's a new law जो उसकी issues को reform करने की कोशिश करता है. Reformatory legislation. Karishma, Mukesh, Dhanlakshmi, I think you all said it's a true statement, Okay, right? sir. Do you get my point? Okay, sir. Yes, sir. हाँ. समझ जाएगा. हाँ. तो लैंग्वेज एंड टोन बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में. यूपीएससी के टोन के हिसाब से आप स्टेटमेंट दे रहे हो. यस, बहुत जरूरी है ना वो, नहीं तो पता कैसे चलेगा. जी. नाउ आई गॉट इट. यस. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इन इंडिया prison management is solely the responsibility of the states. In India, prison management is solely the responsibility of the states. True or false? Okay, Lakshmi, I'm waiting for your response. Okay, true. Mukesh, गलत क्यों है ये? Why is it false? सर ट्रू ही है, बट आपने सोनली बोला तो थोड़ा डाउट ऑफ वो आ गया कि सोनली, क्योंकि कई बार सेंटर भी इन बिटवीन आ जाता है. तो आई डोंट थिंक सो सोनली वैसे है, स्टेट लिस्ट में ही है. बट अगर कोई जैसे बहुत सारे स्टेट लिस्ट में भी लॉ ऐसे हैं जिसपे कि इवन सेंटर कैन मेक अ लॉ, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. बट सोनली तो ओके. अगर आप ये कहते कि इट इज द स्टेट हु मेक्स द लॉ, देन फाइन. बट इफ यू आर पुटिंग सोनली, इसका मतलब वो कोई और बना ही नहीं सकता. यस. सर होम मिनिस्ट्री भी तो एडवाइस देती है ना. प्रिजन मैनेजमेंट बोल रहा हूं मैं. हाँ सर. हाँ, तो प्रिजन मैनेजमेंट मतलब क्या? द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स. हाँ सर, वो तो स्टेट ही करता है, लेकिन एडवाइस भी देती है सेंटर. तो एडवाइजरी क्या नियम थोड़ी हो गया? स्टेट्स, डू दे हैव द power to reject, to not follow the advice of the central government in this matter? Do they have the power? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी स्टेट की होती है. हाँ, तो बस तो स्टेटमेंट यही बोल रहे. सोनली तो तुमको डराने के लिए दिया था. What is the other statement
अगर सोलली के ऊपर ही डाउट हो रहा है, तुम इसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट बना लो कि प्रिजन मैनेजमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन समटाइम्स मैनेज प्रिजन्स। कैन वी मेक द स्टेटमेंट जिसमें तुमको डाउट हो रहा था कि सोलली में इशू है? मुकेश, हाँ सर, यस यस ऐसा बना सकते हैं क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट Yes, sir. कैन Yes, समटाइम्स sir. मैनेज I प्रिजन्स। got it. I got it. I got it. I got it on what हाँ, ground you said this. Yeah. तो Solely यहाँ पे you were meant कि बिना किसी के मदद के बना सकता है वो solely. मतलब He उसका ही doesn't require 100% like center. वो है, Right. लाठी है, जिसकी Jurisdiction लाठी उसी उसकी भैंस, हाँ, उसकी जुरिस्डिक्शन है Exactly. है ना? तो Okay. मतलब तुम सो द वे ऑफ डीलिंग विद दीस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स है, जहां पर भी गड़बड़ लगे ना, उसका कुछ वैसा सही स्टेटमेंट बना के देख लो कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्टेटमेंट तुम बनाते ही तुमको पता चल जाएगा यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉल्स हो जाएगा ना, स्टेटमेंट अपने आप ही फॉल्स है वो, Exactly. तो स्टेट वाला सोलली ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, राइट? ओके, approximately what percentage of the people who are in jail at present are under trials? This is just I'm asking generally, ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट तुम्हारे मेंस एंड प्रीलिम्स में मे बी जस्ट इनडायरेक्टली हेल्प हो जाए। मेंस में तो डायरेक्टली नंबर कोट हो जाता है, प्रीलिम्स में इनडायरेक्टली प्रॉब्लम। तो अप्रोक्सीमेटली कितना जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल? 67% approx. ओके, यहाँ पे 77 लेगा, 80% के आसपास। अच्छा, This is 77. as per the Prison Statistics of India 2021 report, around 77%, so roughly 80% are under trials. Okay, ये 80% वाला डायरेक्टली नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, मेंस में ये डेटा डायरेक्टली कोट you can do it, but in prelims this can be maybe handy indirectly. Okay, एक बार वो क्वेश्चन आया था, if you recall, NSSO 67th round या 69th round of ये NSSO about agricultural household survey, right? हाँ सर, हाँ सर, यस Two-thirds- सर, उसमें कुछ कास्ट बेस भी था, बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, 2/3 Rajasthan has got the highest number of households, rural households in agriculture ऐसे करके, and second Yes, sir. statement was 2/3 of the total agricultural households are Women. OBCs, है ना? So maybe something on these lines probably. तो बस उस एंगल से these are the important statistics जो थोड़ा ध्यान दो तो काम तुम्हारा बेहतर बनेगा एग्जाम में, ठीक है? आगे चलते हैं। In India, bail is governed by a separate dedicated legislation. In India, bail, ठीक है, bail और जेल से निकालने वाली bail is governed by a separate dedicated legislation. True or false? Give me a thumbs up if it is true and a face emoji if it is false. मुकेश, कॉल लेना पड़ेगा इस स्टेटमेंट पे। करिश्मा, कॉल लो। सुनील, तूने क्या बोला है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, फॉल्स है। ओके, क्यों फॉल्स है? नील, व्हाई इज इट फॉल्स? IPC sections and hello. Yeah. Yes, in IPC sections and CRPC sections, the bail provisions are given. There is no separate legislation. Okay. Any other reasoning? Anyone who feels Sir, it is false? Same reason. सेम सर, Okay. क्योंकि सर पढ़ा था। ठीक है। Because Supreme Court recently has asked the central government to frame a bail act. Lakshmi, why is it a true statement? Sir, I thought I read like bail. There is a bail act 2013. You think that there Yes, is sir. a bail act? Okay. Which famous personality did you recently see in the context of bail or going to jail or something? Some famous personality? Did you notice anyone? Famous people keep going to jail, right? Yes, sir. And this issue of bail, I'm not talking of some one odd issue of some just general citizen, but from the angle of famous one of the people I'm minister talking. in Tamil Nadu. Yes. So did you, if the newspapers are talking about the minister getting or not getting bail, the newspapers will also talk about a dedicated law
if it is there, right? Yes, sir. Have you ever heard of such news? Any dedicated law, the Bail Act? The ministry is not getting bail as per the Bail Act. Have you heard anything like that? No, sir. No. So this is a false Mm. statement because of this reason. Because Okay, it is such an important matter, such a regular, mundane matter that it is there in the newspaper, like every day somebody or the other is in jail and this matter of bail is in news, right? And we have never heard of a dedicated legislation for this. If there were a dedicated legislation, we surely would have heard about it, right? Yes, sir. So there's a technique, there's a elimination technique. That's it. For common matters, Okay. for important matters, if you have not heard of something and if the statement as per UPSC is like this, UPSC in this statement, for example, is stressing too hard. It is saying a dedicated legislation for the matter, right? Dedicated legislation. So you should have heard. There's a very high chance you would have heard, right? Yes, If sir. you have not heard, so it is not correct. Mukesh, तूने Okay, क्यों sir. correct बोला? I understand. मैंने तो कुछ नहीं बोला, मुझे पता नहीं था। नहीं तो मैंने कॉल लेने के लिए कहा था ना। ये तो प्योर नॉन स्टैंडर्ड हाँ, स्टेटमेंट था, इसमें इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। इनको ठीक। छोड़ो मत, ये अच्छा चांस है प्रैक्टिस करने का यार, ओके। एलिमिनेशन प्रैक्टिस करने का। उसमें गलत भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करो। हाँ सर। ओके, द बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the Committee on Jail Reforms was chaired by Justice A.N. Mullah. The Committee on Jail Reforms is chaired by Justice A.N. Mullah. Or let me frame it once again. The Committee on Jail Reforms of 1980 was chaired by Justice A.N. Mullah. Now, just because I'm looking at my screen doesn't mean I'm just reading it out from the magazine. Okay, there's a trick that I play. So I can say, I can look and I can say the false facts. Neel, you have to take a call. Okay, it's a false statement. Karishma, Lakshmi, Sunil, तूने क्या बोला? True है. मुकेश, तूने क्या बोला है? True है. मुकेश, true क्यों है? True क्यों है? सर ये सेम वैसा ही है जो एक केस था ना, वो पता याद नहीं आ रहा मुझे, बट ये फैक्ट ऐसा है कि वी डोंट रिमेम्बर दीज फैक्ट्स ना। We don't remember these facts. We can't prepare these facts. Okay. अनप्रिपेरेबल है और जनरली ट्रू होते हैं क्योंकि ठीक है, फॉर्मल है, फैक्चुअल है, ठीक है। सेम रीजन पर है सुनील का होगा। नील, व्हाट इज द रीजन इट इज ट्रू? Same reason, and also the retired chief justice and chief justice usually form these kind of chair these kind of committees, sir. Okay, actually that is a secondary reason that justice judiciary people generally chair these kind of committee. That's a secondary reason. Yes. If instead of Justice Mullah, if some other name also were given, then also it would be correct only. Yes. Okay, like UPSC will not give these kind of unpreparable facts as incorrect. It has to give them correct only, unless there is some other word, some other tone, energy in the statement, you know, something else which is making it false, or some other statement in the question is conflicting with this statement. That's another matter. But if it is a separate, dedicated statement, independent statement you are taking, then these kind of statements generally are correct. Karishma, why do you think it is wrong? Karishma? सर जेल रिफॉर्म के ऊपर मैंने एक टॉपिक पढ़ा था और आंसर राइटिंग भी की थी, तो वहां मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ, पर सर उनका नाम के.एन. मुल्ला नहीं था, कोई और थे, भी याद नहीं आ रहा। जेल रिफॉर्म्स 1980 वाली में भी तुम जिसकी बात कर रही हो वो कोई और भी तो हो सकती है। हाँ सर, वो कोई और थी, पर मैंने कहीं इनका नाम नहीं सुना, दैट्स व्हाई। नहीं, फिर से वही गलती करी तुमने। पिछले मकवाले वाले में भी यही गलती करी कि जस्ट बिकॉज तुमने नहीं सुना तुम उसको फॉल्स मार्क कर रहे हो, इसीलिए यूपीएससी ये स्टेटमेंट्स देता है, इस टाइप के अनप्रिपेरेबल स्टेटमेंट्स हैं। बिकॉज तुम हर चीज नहीं प्रिपेयर कर सकती हो ना, तुम तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही प्रिपेयर कर सकती हो। हाँ सर।
बट अदरवाइज इस स्टेटमेंट में और कोई भी गड़बड़ नहीं है ना ही इनफॉर्मल है, ना ही नो कुछ नो नो का सर, वर्ड कुछ बोल रहा है, ना ही मैं किसी और स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल रहा हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। नो सर। तो अगर अनप्रिपेरेबल ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो ज्यादा चांस है कि वो सही ही होगा। ओके सर। ठीक है लक्ष्मी, यू वांट टू शेयर द रीजन व्हाई यू थिंक इट इज फॉल्स? Sir, sir, I thought it would be false because I didn't hear about it, and So same reason as I'm not Karishma, sure that's why, sir. and I've explained why these are correct. Mukesh? Yes, sir. Yes. Hello, Mukesh, हाँ बोलो. sir, am I audible? Yeah. Sir, if first part of the question is known, like jail reform we read, right, and with the unusual fact and names, then it is usually correct. If the first statement or any part of the statement having the unknown fact and name and unknown committee or body, nothing is known, then it becomes the defect. Then it's become has to be wrong kind of thing. वो अपने अपने प्रैक्टिस से होगा। देखो इस टाइप के ऐसा रूल नहीं कुछ भी बनाना है, वो हर स्टेटमेंट का एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसमें प्रैक्टिस जब करते रहोगे तो ये चीजें अपने आप फील होंगी। इसको कुछ भी ऐसा यूनिवर्सल नहीं बनाना है, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप फील हो जाएगा। हर स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली देखना है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, वी कैन टेंड टू ओवरलुक सर्टेन थिंग्स एंड फोकस टू मच ऑन सर्टेन अदर थिंग्स, तो वो हमारा प्रोसेसिंग गलत कर सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली लेना है हर स्टेटमेंट को। आगे चलते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर, चलो करिश्मा। ओके करिश्मा, यू हैव टू आंसर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके। द ओपन प्रिजन मॉडल, देयर इज समथिंग नोन एज ओपन प्रिजन। ओके, जो नॉर्मल प्रिजन होती है वो क्लोज्ड प्रिजन होती है, लाइक वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड अ लॉट ऑफ दिस थिंग, डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक दैट। Open prison is opposite of that. It is a prison but more humane and thoda sa liberal zyada hota hai. Okay. So open prison model was the open prison model, the modern open prison model originated in the United Kingdom in 1930s. True or false? You want me to repeat? Let me know. Okay sir, repeat करिए सर। The modern MODERN, ठीक है, आधुनिक modern open prison model MODEL, the modern open prison model originated in the United Kingdom in the 1930s. Sir, true. True. Okay, I'm opening it to everyone. Give me a thumbs up if it is true and a face emoji if it is false. नहीं, call ले सुनील, you have to take a call. It's a non-standard statement, pure non-standard statement. False क्यों? Sir, I think they were ruling India, then how can they have said that open ये prison? तो बोला ही नहीं है कि इन इंडिया द मॉडर्न ओपन, मैंने तो ये बोला है द मॉडर्न ओपन प्रिजन मॉडल। Sir, I've heard that it originated in Nordic countries. हर्ड मॉडर्न की बात कर रहा हूं मैं। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो जो तू बोल रहा है वो कोई स्टैंडर्ड चीज थोड़ी है, तूने तो सिर्फ स्टैंडर्ड वाला ही प्रिपेयर किया होगा ना, स्टैंडर्ड फैक्ट ही प्रिपेयर किया होगा। Right. इज दिस अ नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट और नॉट? It is non-standard. इट इज प्योरली नॉन स्टैंडर्ड, टॉकिंग अबाउट सम अदर कंट्री एंड 1930s की बात कर रहा है। राइट, इसमें दो चीजें हैं, एक है नेम ऑफ द कंट्री विच इज यूके एंड द टाइम पीरियड विच इज 1930s। अब इसमें ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे मैंने 1930s बोला है, 30 नहीं बोला। अगर मैं 30 बोलूंगा तब ये डीप फैक्ट हो जाएगा, बिकॉज फिर स्ट्रेस विल नॉट रिमेन ऑन द कंट्री, स्ट्रेस विल मूव फ्रॉम द कंट्री टू द ईयर। वो दो कदम ले लिया ना उसने, एक कदम हो गया कंट्री, दूसरा कदम हो गया ईयर। Okay. PDPD is a large refugee settlement in northwestern Kenya. दो कदम लिया ना,
कीनिया इज द फर्स्ट स्टेप, और कीनिया में भी कहाँ सेकंड स्टेप, 2 कदम लिया ना स्टेटमेंट में. तो दिस वाज द रीजन व्हाई दिस वाज डीप फैक्ट. Right. So you have to pay attention. In this statement, I did not say that it originated in the UK in 1930. Had I said that 1930, then it will be a false statement because it's a दो कदम statement है ये, 2 कदम ले रहा है. कंट्री भी Right. इंडिया नहीं है और उसमें भी 1930 डीप फैक्ट हो गया. स्पेशलिस्ट को ही पता होगा, गलत होना चाहिए. Right. मैंने 1930s बोला, 30s बोला तो स्ट्रेस पीरियड ड्यूरेशन पे जा रहा है. एनी टाइम इन 1930s, तो उसमें डिग्री मतलब जो मेन स्ट्रेस है स्टेटमेंट का वो 30s पे नहीं है, वो फिर कंट्री के ऊपर ही आ रहा है. राइट? Okay. Yes. तो कंट्री पे आ रहा है तो करेक्ट ही होगा ना. Okay, sir. I got it now. हैज टू बी करेक्ट. राइट? Right. STPC. Guys, give me a thumbs up if you understand what I said. Give me a thumbs up if you understand what I said. Mukesh? Okay. चलो अब आगे आते हैं. Now the statement is Rajasthan is the only state in India which has implemented the open prisons model. True or false? Everyone, give me a thumbs up for true, a face emoji for false. Rajasthan is the only state in India to implement the open prisons model. Rajasthan. False. Lakshmi, take a call. You have to take a call, Lakshmi. Rajasthan is the only state. Okay. Neel, why is it false? Why is it true? It's a non-standard statement, sir. Yes. And Model Prison Act is not compulsory for all the states. So Compulsory की it is left बात ही to the नहीं है. Neel, this is not a statement about anything being compulsory. Prisons is a state subject. We know that, right? Yes. So every state has got its own prerogative. The statement is Rajasthan is the only state in India. That means in order to say that it is a true statement, you need to be damn sure that every other state and UT of India does not have a open prison model. Are you sure of Yes. that? No, sir. Only specialists will know that, right? Yes, sir. So it's a deep fact, and deep facts are false, Yes. right? Yes, sir. I got it. Yes, that's why it's a false. Not just because only is there. That only, this is the reason. Like if you say only Rajasthan, then all the other states should not have it. And to know that they will not have it, only specialists will know. So specialist facts are wrong. That's it. That's why it's a wrong statement. Okay. The next statement is Rajasthan is the first state in India to implement the model prisons, the open prisons model. Rajasthan is the first state in India to implement the open prisons model. Take a call, Sunil. Lakshmi. Rajasthan is the first state in India to implement the open prisons model. Take a call, Lakshmi. False. Okay. Mukesh, true क्यों है? सर राजस्थान मतलब इम्पोर्टेंट चीज है जो पहले लेता है कि यूजुअली दे आर इनटू द पिक्चर, और ये पूरा वो मतलब सॉफ्ट स्टेटमेंट भी है. नहीं, सॉफ्ट कहाँ है? इज द फर्स्ट स्टेट तो हार्ड स्टेटमेंट है ना. इज द फर्स्ट स्टेट. ओके. वो फोटोवोल्टाइक वाला भी तो एक स्टेटमेंट था. ये फोटोवोल्टाइक फ्लोटिंग सोलर वाला एक शायद मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था ना. हाँ सर, 2022 में आया था. हाँ, ये फर्स्ट वाले तो बहुत. सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया ऐसे करके एक आ रखा था. बाईगाज एंड वो बाईगाज वाला भी एक स्टेटमेंट था. फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव बीन गिवन ट्राइबल राइट्स. तभी तो ट्रू है सर. नहीं ठीक है. तो तू ये कह रहा है कि बिकॉज यू हैव रेड इट, तूने कहीं पढ़ा है इसके बारे में?
सर मैंने पढ़ा भी है और इस तरह के स्टेटमेंट पहले करे भी है ना, जैसे सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट हो फॉर द वो तो ऑर्गेनिक बहुत स्टैंडर्ड आपने फैक्ट बताया और है। पहले भी। नहीं, वो सिक्किम वाला तो ये भी स्टेटमेंट तो और ये स्टैंडर्ड फैक्ट है सर। नहीं, ओपन प्रेजेंस मॉडल कहाँ स्टैंडर्ड फैक्ट है यार? हम ओपन प्रेजेंस मॉडल पढ़ते सर हैं क्या? ओपन प्रेजेंस मॉडल नहीं पढ़ते, बट प्रेजेंस मॉडल में राजस्थान का आता है और यही फर्स्ट स्टेट है जिसने करा था। ओके, मतलब चलो, मैंने पढ़ा भी है और ओके ओके। नील, you want to say something? Yes, in earlier statement it was the only state, Hmm. so it becomes a de fact. Yes. But in this statement it is the first state, Hmm. so it doesn't require a deep knowledge to know it can be the first. So, as a statement is non-standard, so it's not the de fact, so it is usually true, standard, non-standard fact. Okay. So Neil, why is it false? So what my understanding says is that there is Congress government in the Rajasthan Mm-hmm. and there's BJP government in the center. Mm-hmm. So why would a Congress government be the first to implement something which is made by BJP government? We have seen that these governments have always been in, a tussle not to act in line with each other. The question I asked never said anything about the year or period in which it could start in 50s, 1950s, 40s, sometime like 48, 49, some maybe then. But sir, model act तो अभी आया ना? Open prison model. Open- मॉडल प्रेजेंस एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपन प्रेजेंस मॉडल की बात कर रहा हूं। सर ओपन प्रेजेंट मॉडल भी तो वुड हैव हो जाता। ओपन प्रेजेंट मॉडल में वुड हैव हो जाता, क्यों? Because it's a great feat. We do not have it. We have so many under trials जिनकी हालत वैसी ही खराब है। ओपन प्रेजेंट हो जाता तो ये कुछ अलग ही एक्सेप्शनल चीज हो जाती है हमारे लिए, and it would have gone across like all the newspaper in the front. Okay, fair enough. Karishma, you anyone else wants to share any other reasoning why it is a false or a true statement? सर कुछ बिना ओवर थिंकिंग किए सर, मेरा तो ये था क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि गोवा ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है, Okay, दैट्स व्हाई, बाकी Okay. कुछ रीजन। okay. चलो मैं एक और पहले let me just ask you a few more question and then we'll come back to this statement and see if we can get some more clarity. Rajasthan has the most successful has been the most successful in administering open prisons model or in administering open prisons, true or false? Rajasthan has been the most successful state in having open prisons. सर No रिपीट idea. कर देंगे एक बार? Rajasthan is the most successful state in implementing the open prisons model. False. Okay. क्यों false है मुकेश? सर आवाज कट रही है. Hello. Neel, why is it false? The first is open present model is not a standard type of questions. So, and to know that Rajasthan is successful, we have to know all the states' performances in the. No. If a state is in news regarding something, and if the news is positive, if the news is not criticizing the state, then Yes. it means it is a successful state, right? Rajasthan model is being given as an example of a successful model in your magazine. Yes. Have you read the magazine? No, sir. No. Okay, so in the magazine on page number 7, there's this blue box. It is mentioned open prison, and it is said open prison model adopted in Rajasthan, and then it is saying has promoted a reformative form of punishment and succeeded in transforming the lives of inmates. Okay, so that Yes. means Rajasthan model of open prisons is being displayed as a successful model. Role model. Role Yes. model. Yes. So unless some negative
news is there about some state, and if that state is in news in the context of something, that means that state has done well in that domain, right? Yes, sir. Yes. And if that state is already making news, making headlines in that context, that means it is the most successful. Otherwise, some other state would be said as a model state. Yes or no? Yes, sir. So this statement that Rajasthan is the most successful state in the context of open prisons should be a true statement, because Rajasthan is the state which is being given in our books in the context of open prisons. Guys, Yes. give me a thumbs up if you understand what I'm saying. Give me a face emoji if you don't understand what I'm saying. Great. Okay, because your cameras are not open, so I'm not able to figure out whether what I'm trying to communicate is actually getting communicated or not. So I'll have to ask for your, whether you are getting clarity or not repeatedly. Yes, Sunil? Sir, because we are talking about something which is positive, that is why it is correct, right? Okay. Organic farming, or which state will come to your mind when you talk about organic farming revolution? Which state will come to your mind? Sikkim. Sikkim. So Sikkim is the most successful state in organic farming. ये तो statement correct हो जाएगा ना? Whether it is the first or not, वो नहीं पता, वो fact है. It could be some other state, but because organic farming is so important, which open prisons is not. Organic farming is so important, so the first state in organic farming we will know. Very high chance we will know, right? This is the reason why अगर कोई और state होता तो फिर हम वो would have heard लगा के false हो जाता वो. If it says Haryana or Punjab, these are the farming rich states, right? So Right. Punjab is the first organic farming revolution state of India. Why? False होगा ना? Why? Because would have heard Punjab is very popular in the context of green revolution. Haryana, Punjab, Western Rajasthan, very popular in the context of green revolution and conventional farming. Right. Irrigation, canal irrigation and all of that. Not in the context of organic farming, right? Right. Now, because Right. this is such an important domain, would have heard is very actively, aggressively active in this statement that X state, XYZ state is the first state in organic farming. But open prisons is not as important as your this thing, any other like organic farming type. Okay, so to say that, अब देखो, अब ये जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ये इस basis पे है कि you have gone through the magazine and the magazine is giving you the name of Rajasthan. So that means open prisons model में which is the state that we will give as example in the mains exam? Rajasthan. Right. Now I am making the question that Rajasthan is the first state to implement open prisons model. In this case, it becomes false because Rajasthan is the most successful. Yes, Rajasthan has got, if the next statement is Rajasthan has got the maximum number of open prisons in India, this also will be a correct statement because Rajasthan is the model state in open prisons. It is the face of open prison revolution in India, so to say. So it will naturally have the largest number of open prisons, na? Right. Most successful में भी correct हो जाएगा, largest number of open prisons में भी correct हो जाएगा, लेकिन first state for open prison यहाँ पे would have heard हो जाएगा because राजस्थान otherwise सुना है ना हमने, मैगजीन में पढ़ लिया ना, मैगजीन में नहीं लिखा है कि ये first state था, इसलिए ये statement गलत है. मैंने चेक करके अगर फर्स्ट होता तो मैगजीन में लिखता ना पक्का. Exactly. ठीक है सर, समझिए, लिखता. समझिए. हाँ. Mukesh and others who said that is a true statement, just let me know if you understand what I'm saying. So Rajasthan, हाँ, Rajasthan is not the first, UP is the first. वो मैंने देख लिया था, गूगल पे देख के ही मैंने ये बनाया. लेकिन अगर मान लो बिल्कुल रैंडम होता, तुम्हारे मैगजीन में ओपन प्रिजन्स का कोई मेंशन ही नहीं होता,
then it will have to give that UP is the first state to implement open prison model. It will give the correct statement only. UPSC will give the correct statement only. Are you getting the difference? Give me a thumbs up if you are getting the difference in these two cases. Can you repeat the last two lines? I'm saying because open prison model and Rajasthan are given in our magazine, now it has become kind of a standard fact which we know as an example. अगर ये नहीं दिया होता, अब ओपन प्रिजन के बदले मान लो पागल खाने के मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिख दे यार, पागल खानों के बारे में कुछ लिख दे, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब रैंडमली आ गया ना, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ लिख दे, उसमें तो जो बोलेगा XYZ state is the first state, तो ठीक है, होगा वो, because that is unpreparable, completely random, unpreparable official statement. Okay, Got it. that kind of. So that means whatever we are covering is becoming a standard fact for us. Yes. But whatever is not, so it will become something which is It's by a nature true. Yes, yes. Okay. But of course the other things are important. You have to go for words have meaning, है ना? हाँ, that is वो there. सब Right. लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं. Okay, that's it. And also देखो जो चीज जो पहला स्टेट होता है ना, वो ही मॉडल बनने का चांस भी कम होता है, बिकॉज पहले में तो गलतियां बहुत होती हैं. The best state, it's not always the case that the first state is becomes the best state or the model state, right? तो गलतियां करने का भी चांस है, उससे सीखते हैं and then you improve. So that kind of approach also can be there. But what I wanted to show via this this example is when something is standard, would have heard becomes important. When something is not standard and completely random, HTBC has to be correct becomes important. And of course the other level 1 techniques of words have meaning, related not related, they apply always. ठीक है, आगे चलते हैं.